Hello everyone. In previous class, we discussed about what is the two-reaction theory and its detailed phasor diagram. So, in this lecture, we will study about what is slip test. And by using this test, we can determine the value of XD and XQ. What is XD and XQ? XD is called the direct axis reactance and XQ is called the quadrature axis reactance of the synchronous machine. प्रीवियस वाली क्लास में हमने देखा था टू रिएक्शन थ्योरी. एक्चुअली टू रिएक्शन थ्योरी से ही ये XD और XQ हमें मिलते हैं. टू रिएक्शन थ्योरी में क्या होता है? टू रिएक्शन थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सैलिएंट पोल मशीन, क्योंकि सैलिएंट पोल मशीन में सैलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन रोटर का होने के कारण एयर गैप जो होती है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है. नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होने से अलोंग द पोल और बिटवीन द पोल हमें डिफरेंट रिएक्टेंस मिलते हैं. तो एक रिएक्टेंस को हम डायरेक्ट एक्सिस में कंसीडर करते हैं जिसको हम XD से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे रिएक्टेंस को हम क्वाड्रेचर एक्सिस में कंसीडर करते हैं जिसको हम XQ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आज हम देखेंगे कि XD और XQ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लिप टेस्ट. आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन द टॉपिक शॉर्ट सर्किट रेशियो, इन शॉर्ट SCR. फिर हम स्टडी करेंगे कि जो SCR है वो क्या होता है in case of synchronous machine, as well as the significance of SCR in case of synchronous motor as well as the synchronous generator. And finally, the reference of this presentation. So in this lecture we cover all this topic one by one. So let's start with topic 1. The name is slip test. The method used to determine XD and XQ, the direct and the quadrature axis reactance, is called slip test. वो मेथड जिसके थ्रू हम XD और XQ निकालते हैं उसको ही हम स्लिप टेस्ट बोलते हैं. Next is determination of XD and XQ using slip test. The method used to determine the value of XD and XQ is called slip test. Important caution for conducting slip test is: number 1, slip should be extremely low during experimentation. In case of high slip more than about 5%, following effect may be observed. एक्चुअली पहले हम समझते हैं स्लिप क्या होती है. तो स्लिप इज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन दी NS और NR. NR और NS के बीच का जो स्पीड डिफरेंस होता है उसी को हम स्लिप बोलते हैं. व्हाट इज NS? NS इज कॉल्ड द सिंक्रोनस स्पीड एंड NR इज कॉल्ड द रोटर स्पीड. तो इन दोनों बीच की जो स्पीड्स का जो डिफरेंस होता है दोनों स्पीड के बीच का, उसको ही हम स्लिप बोलते हैं. तो वो स्लिप जो है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ही कम होना चाहिए. ओके, तो अगर हमारी स्लिप की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये दो इफेक्ट होंगे. फर्स्ट इफेक्ट, करंट इंड्यूस्ड इन द डैम्पर वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर विल प्रोड्यूस एन एप्रिसिएबल एरर. डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और डैम्पर वाइंडिंग का यूज हम करते हैं 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, क्योंकि इट इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन. सेकेंड इफेक्ट, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन ओपन सर्किट फील्ड में रीचेस dangerous value. The second point is, it should be assured that the induced voltage in the open circuit is less than the rating of the voltmeter connected in the circuit. तो ये हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखने होते हैं जब हम स्लिप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. Next is slip test. In an alternator means synchronous generator. In an alternator, we apply excitation to the field winding and the voltage get induced in the armature. This is the
सर्किट डायग्राम फॉर स्लिप टेस्ट। आप देख पा रहे होंगे स्लिप टेस्ट का सर्किट डायग्राम है। इसमें हम 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग को 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं 3 फेज सप्लाई से, क्योंकि हमें यहाँ पे धीरे धीरे वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाना है, इसलिए हमने 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया हुआ है इन केस ऑफ 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर, और फील्ड वाइंडिंग को हमने ओपन सर्किट रखा हुआ है। तो दिस इज द सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्लिप टेस्ट। करंट मेजरमेंट करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का एक एम्पियर मीटर या मीटर सीरीज में लगाएंगे, और वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। A 3-phase supply is applied to the armature having voltage must less than to the rated voltage while the field winding circuit is kept open. The circuit diagram is shown in a figure. So this is the diagram for slip test. The alternator is run at speed close to synchronous but little less than to the synchronous value. अब हमें क्या करना है, अल्टरनेटर की स्पीड को मेजरमेंट करेंगे बाय द यूजिंग टैकोमीटर। टैकोमीटर से हम देखेंगे कि स्पीड जो हमें रेटेड स्पीड हमें पहले से पता होगी 1500 आरपीएम या 1800 आरपीएम जितनी भी है वो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, और हमें नियरली 1500 आरपीएम अगर है तो नियरली 1500 आरपीएम तक अल्टरनेटर को घुमाना है, मींस 1490 या 1495 आरपीएम तक हम अल्टरनेटर को घुमाएंगे। The 3-phase current drawn by the armature from a 3-phase supply produce a rotating magnetic flux. Thus, the armature MMF wave is rotating at synchronous speed as shown in figure 2. तो इस वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब हम 3-phase सप्लाई से कनेक्ट करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग को, तो चूंकि आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन स्टेटर, आर्मेचर हमारा जो है आर्मेचर वाइंडिंग वो स्टेशनरी है, बट उसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम उसमें 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड क्या होगी? ns इज इक्वल टू 120 f/p। इससे हम ns की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। Note that the armature is stationary, but the flux and hence MMF wave produced by 3-phase armature current is rotating. आर्मेचर हमारा स्टेशनरी है, बट जो उसका फ्लक्स है 3 फेज वो घूम रहा है, मींस रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे जनरेट हो रहा है। दिस इज सिमिलर टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन एन इंडक्शन मोटर। The rotor is made to rotate at the speed little less than the synchronous speed. Thus, armature MMF having synchronous speed move slowly past the field pole at a slip speed ns minus n, where n is actual speed of the rotor. This causes an EMF to be induced in the field circuit. When the stator MMF is aligned with the direct axis of the field pole, then the flux phi d per pole is set up, and the effective reactance offered by the alternator is xd. Similarly, when the stator MMF is aligned with the q axis of the field pole, then the flux phi q per pole is set up, and the effective reactance offered by the alternator is xq. As the air gap is non-uniform, चूंकि ये जो हम बात कर रहे हैं XD और XQ की, ये सैलिएंट पोल मशीन में ही एप्लीकेबल है, नॉन सैलिएंट पोल में नहीं है, क्योंकि उसमें स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप यूनिफॉर्म होता है। बट इन केस ऑफ सैलिएंट पोल मशीन, स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। सो एज द एयर गैप इज नॉन यूनिफॉर्म, द रिएक्टेंस ऑफर्ड आल्सो वेरीज एंड हेंस करंट ड्रॉ द आर्मेचर आल्सो वेरीज cyclically at twice the slip frequency. The RMS current is minimum when the machine reactance is XT, and it is maximum when the machine reactance is XQ. As the reactance offered varies due to non-uniform air gap. अब क्वेश्चन आता है कि हमारा रिएक्टेंस वेरी क्यों करता है एयर गैप वेरी करने से? चूंकि
रिलक्टेंस हमारा वेरी करता है, इसीलिए हमारा रिएक्टेंस भी वेरी करता है। रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ फ्लक्स। तो रिलक्टेंस डायरेक्टली हमारा डिपेंड होता है लेंथ ऑफ एयर गैप पे। अगर लेंथ ऑफ एयर गैप ज्यादा रहेगी तो रिलक्टेंस भी वहां पे ज्यादा रहेगा। The voltage drop also varies cyclically. Hence, the impedance of the alternator also varies cyclically. The terminal voltage also varies cyclically. The voltage at the terminals is maximum when the current various drops are minimum, while the voltage at the terminals is minimum when the current and various drops are maximum. The waveform of the voltage induced in the rotor, terminal voltage and current drawn by the armature as shown in figure 3. So this is the current and voltage waveform in slip test. So this is the voltage across open field circuit with respect to the time. This is the terminal voltage. This one is called the terminal voltage and this one is called the terminal current. तो ये मैंने वोल्टेज का वेवफॉर्म और ये तीसरा वाला जो है सी, ये है मेरा करंट का वेवफॉर्म। तो पर्टिकुलर जब हमारी साइन वेव जो है वोल्टेज अक्रॉस ओपन फील्ड सर्किट मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, तब हमारा वोल्टेज जो है टर्मिनल वोल्टेज वो मिनिमम रहेगा और उस कंडीशन में करंट जो है, देखिए वो करंट जो है वो मैक्सिमम रहेगा। इस कंडीशन में हमें जो रिएक्टेंस फाइंड आउट होगा वो होगा XQ। सो XQ हमें कब मिलेगा? जब हमारा मिनिमम टर्मिनल वोल्टेज और मैक्सिमम करंट रहेगा, उस कंडीशन में हमें मिलेगा XQ। और इसका जस्ट अपोजिट रहेगा XD में, मींस वोल्टेज तो मैक्सिमम है बट करंट की वैल्यू जब मिनिमम होगी उस कंडीशन में हमें मिलेगा XD। तो इस तरीके से हम XQ और XD को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लिप टेस्ट। It can observe that the rotor field is aligned with the armature MMF. Its flux linkage are maximum, but the rate of change of flux is zero. Hence, the voltage induced in the field goes through zero at this instant. This is the position where the alternator of a reactance XD. While when a rate of change of flux associated with rotor is maximum, the voltage induced in the field goes through its maximum. This is the position where the alternator offers the reactance XQ. The reactances can be calculated as XD is equal to maximum voltage divided by minimum current, or we can say that VT line at minimum IA divided by √3 into IA minimum. तो XD हम कैसे निकाल सकते हैं? कब मिलेगा हमें? जब मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा और मिनिमम करंट रहेगा। XQ is equal to minimum voltage divided by maximum current, or we can say that is equal to VT line at maximum IA divided by √3 I max. तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसके थ्रू हम XD मींस डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस एंड XQ मींस क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लिप टेस्ट। Slip test and determination of XD and XQ. The next topic is SCR means short circuit ratio. The short circuit ratio of synchronous machine is defined as the ratio of the field current required to generate rated voltage on an open circuit to the field current required to circulate rated armature current on short circuit. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है डेफिनेशन, बट डायग्राम से भी हम देखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट रेशियो एक्चुअली
दो फील्ड करंट का जो है वो रेशियो होता है, एक फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट द रेटेड वोल्टेज एंड अनदर इज फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट अ रेटेड आर्मेचर करंट ऑन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो इसके लिए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट जो दोनों टेस्ट की हैं उसी के थ्रू हम शॉर्ट सर्किट रेशियो को SCR को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखेंगे अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। द शॉर्ट सर्किट रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स इन शॉर्ट OCC, जो कि हमने जब वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर निकाला था तो उस कंडीशन में हमने ओपन सर्किट टेस्ट एज वेल एज द शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों परफॉर्म किए थे और हमने डिफरेंट मेथड जो है वो स्टडी किए थे, जैसे MMF मेथड, EMF मेथड, ZPF मेथड एंड ASA मेथड टू फाइंड आउट द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर। इन सारे टेस्ट में पहले हमें ओपन सर्किट टेस्ट करना होता था, फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना होता था। ZPF के केस में एक जीरो पावर फैक्टर टेस्ट भी हम करते थे। So, OCC at rated speed and the short circuit characteristics in short SCC of a three-phase synchronous machine as shown in a figure below। चलिए हम देखते हैं फिर से OCC और SCC वाला ग्राफ सिंक्रोनस मशीन के लिए। So, from the figure, the short circuit ratio is given by the equation. The SCR is equal to IF means field current for rated open circuit voltage। चलिए हम देख लेते हैं जरा ये कहाँ है। तो OA, this is called O and this is called A। ये किस पे हम बात कर रहे हैं? दिस इज रेड कलर की जो आपको यहाँ पे एक कर्व दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड दी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, और ये ब्लू कलर का जो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्टरनेटर। तो जो ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है IF फॉर रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ पे हमारे पास कुछ रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू होगी, उसको हमने ओपन सर्किट लाइन पे आगे बढ़ाया। मींस फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मान लो 440 वोल्ट है, तो 440 इस एक्सेस पे हम वोल्टेज को डिफाइन करेंगे। तो मान लो यहाँ पे मेरा 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट को हम स्केल के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जो कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक पॉइंट C पे कट करेगी। ठीक है, अब उसी पॉइंट को हम वर्टिकली एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और परपेंडिकुलर डाल देंगे सीधा IF पे, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा A। तो वैल्यू ऑफ OA इज कॉल्ड दी फील्ड करंट फॉर रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज। ऐसे हम निकालेंगे पहली वाली वैल्यू। दूसरा है हमारा फील्ड करंट फॉर रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। हमारा जो इस साइड वाली एक्सेस है इस पे हमने करंट को कंसीडर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा रेटेड करंट अगर मान लो 5 एम्पियर है तो 5 यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 5 कर दिया। 5 को हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, स्केल से स्ट्रेट लाइन करके आगे खींचेंगे जब तक कि वो SCC पे कट नहीं करता। SCC पे जैसे ही वो कट करेगा हमें एक पॉइंट E मिलेगा, इससे परपेंडिकुलर डाल देंगे हम किस पे, फील्ड करंट पे, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा D। तो पॉइंट OD इज कॉल्ड दी field current for a rated short circuit current. So the ratio of OA and OD is called the short circuit ratio. This is called the equation number 1. Since the triangles OAB and ODE are similar, therefore SCR is equal to OA divided by OD is equal to AB divided by DE. Equation number 2. The direct access synchronous reactance XD is defined as the ratio of open circuit voltage for a given field current to the armature short circuit current for the same field current. For the field current equal to OA, the direct access synchronous reactance in ohms is given by the equation XD in ohm is equal to AC divided by AB. Equation number 3. ये भी हमने उसी कैरेक्टरिस्टिक से फाइंड आउट किया है। The per unit value of XD is given by, पर यूनिट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम बेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट अ पर यूनिट वैल्यू।
सो XD पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू हमारी XD है इन ओम डिवाइडेड बाय बेस इम्पीडेंस, इक्वेशन नंबर 4. बट द बेस इम्पीडेंस इज per phase rated voltage divided by per phase rated armature current. So the base impedance is equal to V rated divided by IA rated, or we can say that is equal to AC by DE in ohm, equation number 5. Therefore, XD per unit is equal to AC upon AB into DE upon AC. So we get DE upon AB, equation number 6. From the equation number 1 and equation number 6, we get short circuit ratio SCR is equal to AB divided by DE, or we can say that is equal to 1 upon DE by AB, or equal to 1 upon XD per unit, equation number 7. From equation number 7, it is clear that the short circuit ratio is equal to the reciprocal of per unit value of direct access synchronous reactance. हम सिंपल लैंग्वेज में हम SCR को और दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि SCR जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ पर यूनिट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस. ऐसे भी हम SCR को डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 7. In a saturated magnetic circuit, the value of XD depends upon the degree of saturation. This is all about the SCR, short circuit ratio of the synchronous machine or alternator. The next topic is the significance of SCR. Short circuit ratio is an important factor of the synchronous machine. It affects the operating characteristics, physical size and cost of the machine. The large variation in the terminal voltage with a change in load take place for the lower value of the short circuit ratio of a synchronous generator. To keep the terminal voltage constant, the field current IF has to be varied over a wide range. For the small value of short circuit ratio, the synchronizing power is small, as the synchronizing power keeps the machine is synchronous. A lower value of SCR has a low stability limit. In other words, a machine with a low SCR is less stable when operating in parallel with the other generator. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं मशीन का और पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है. तो SCR कम होने के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं. फायदा है कि सिंक्रोनाइजिंग पावर जो है वो हमें स्मॉल लगता है बट स्टेबिलिटी कम हो जाती है इन केस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर. A synchronous machine with high value of SCR had a better voltage regulation and improved steady state stability limit. तो अगर हम हायर वैल्यू SCR की सिलेक्ट करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा मिलता है और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट भी बढ़ जाती है और इम्प्रूव होती है. बट द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट इन द आर्मेचर इज हाई. इट ऑल्सो अफेक्ट द साइज एंड कॉस्ट ऑफ द मशीन. The excitation voltage of the synchronous machine is given by the equation EF is equal to 4.44 kW F phi into TPH. इसमें EF जो है वो जनरेटेड EMF है. KW is called the winding factor जो कि मल्टीप्लिकेशन होता है KD और KC का. KD is called distribution factor and KC is called pitch factor. F is called the supply frequency, phi is called the flux and TPH called number of turns per phase turns. For the same value of TPH, excitation voltage is directly proportional to the field flux per pole. So EF is proportional to field MMF per pole divided by reluctance of the area.
The synchronous inductance is given as Ls proportional to 1 upon reluctance of the air gap. Therefore, SCR proportional to 1 upon Ls. नॉर्मली SCR इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सेस होता है, लेकिन अगर हम सिंक्रोनस इंडक्टेंस कंसीडर करेंगे सो SCR प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन LS. Hence, the short circuit ratio is directly proportional to the air gap reluctance of the air gap lamp. If the length of air gap is increased, the SCR can be increased. With the increase in the air gap length, the field MMF is to be increased for the same value of excitation voltage EF. Hence, to increase the value of MMF, either the field current or number of field turns has to be increased. All this requires a greater height of field pole, and as a result the overall diameter of the machine increase. मतलब मशीन का जो साइज है वो बढ़ जाए. Thus, a conclusion is that the large value of SCR will increase the size, weight and the cost of the machine. The typical value of SCR for different type of machines are as follows. For cylindrical rotor, जिसको हम बोलते हैं non-salient pole machine, the value of SCR lie between 0.5 to 0.9. In case of salient pole machine, it lies between 1 to 1.5. And for synchronous compensator, it is 0.4. तो ये कुछ typical value है SCR की. अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो मशीन की जो स्टेबिलिटी एज वेल एज द एफिशिएंसी एज वेल एज द वोल्टेज रेगुलेशन हमें बेटर मिलता है. This is all about the SCR as well as the significance of SCR. SCR की वैल्यू अगर हम ज़्यादा करेंगे तो कॉस्ट, साइज और वेट जो है मशीन का वो बढ़ जाता है. इसलिए हमने कुछ टिपिकल वैल्यूज देखी हैं जो वैल्यूज हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं जिससे कि मशीन ज़्यादा एफिशिएंट रहे, वोल्टेज रेगुलेशन बेटर हमें मिले. The next is references. So these are the references of this presentation. And thank you for watching this video.